वही मैं क्लास में रहा है ना कौन सा प्रोडक्ट्स उसके बाद में बैठा हुआ पीछे वो ले रहा है अभी मेरे स्कूल के घंटा नाम में छोटे अरे मेरे को पीछे लगा ये सारा भी कोई तो आ रही है अच्छा वो सारा Good evening, everyone. Sit down. Attendance sheet has been given. Yes. Everyone have signed? Yes. No, sir. Achha. One sign. Give me the copy back. Let me. Okay. First theory lecture, na? Yes. How many are non-math students? All are math students. Those who have taken, or only SST? How many are only SST in English? All are taken math. Chalo. So I'll once again welcome you to our UP. So myself, Alagesh, I'll be handling only geography and economics. History, you got the same teachers. Or might be, I don't know. Some other teacher will log in, not log in. She'll join in for your history and civics. Volumes have been given. Yes, volume 2. Okay. Let it be.
I won't start the topics as quickly as possible. The volume 2 or Volume 2. Geography starts with chapter number 1, volume 2. So let me clear the confusion, those who are new, those who have not seen me for lectures here. Okay. So one notebook you have to maintain only for my subject. Do not mix with the history. Because history and geography, I think with your May lectures, we will be starting morning. You guys might have intimated. May lectures will be in the morning. And we will have around 4 lectures in a day. And by 2:30 we'll be free. I think 7:30 se start hoga, but they'll 1:30. Yes. And there you will have both the lectures coming simultaneously along with your math and science. So it's better you maintain a separate notebook only for geography and only for economics. Today everyone is having a fair notebook? Yes. Okay. And the last year's performance with UT, non-UT, how was the school's exams, that I will ask in the second lecture. Because first lecture they don't want to down the impression. So as far as geography is concerned, this year you guys are too much gifted because that NEP that was introduced 2 years before going to be implemented by next year. So it's I don't know if you believe in that WhatsApp rumors, or we call it as WhatsApp university. Please don't believe that. 2 board exams, this is not there, that is not there, nothing. Only 1 board exam, like last year, your friends. This year also the pattern will be the same, correct? So you are expected to follow up that same pattern. I hope by next year government is very firm on introducing that. As far as your board is concerned, they said 2 board exam. I think what is that 2 board exam is like term 1 and term 2. That's it. And what is a good thing they have said? Whichever board exam you do good, that will be taken for your admission. I don't know how you guys take it seriously. By the time that is introduced, you will be in your 11th, I don't know, science, NEET, JEE or whatever, or SAT exams given in UT, etc. But be very firm. This year, let us just jump out of 10 CBSE. Everyone is going to jump out. Jump out means pass, but with a very good percentage. Because class improvement is not there for 10th level. We have it at a university level where you can give class improvement exam. Have you heard about class improvement? If you got first class and you feel you want to go for distinction, 2-3 subjects you are allowed to give. अब इंडिया में भी changes बहुत आएगा, especially with education. And I hope by the time you move 12th, you might see more changes coming in. But then at least आपका ये foundation जो है 10th, that you might have cleared. Second thing for geography and history, I know many people have a very dry, what is that? Not so serious approach like that of your, math or science. But then I won't force you. Fundamental rights hai aapka. You have your own views and opinions. But my past students knows me very well, and I'll try to make the subject very interesting. Interesting in what sense? Score it good and forget it. As a teacher, I should not say for that. At least for the 10th you remember, and then go ahead. History, you will have 2 main chapters, if at all your ma'am comes. One is that nationalism in Europe, which will be taking a good deal of, understanding and good deal of learning also. And second chapter is nationalism in India. That you might have at least heard about. Quit India hai, Khilafat hai, non-cooperation hai, civil disobedience hai. But nationalism in Europe comes with a challenge. I remember 4-5 years I used to teach the entire SST. So I make it a point that the nationalism in Europe is fixed in the student's mind exactly stepwise. Both online I have done, both offline I have done, but this year I'm not taking. But you will have a wonderful teacher for that also. As far as geography is concerned, new subject nahi hai. As far as economics, the last year economics do not have any connection to 10th. If you remember the first chapter of economics in your 9th, village Palampur, correct? This year we will not begin like that. This year we will in fact start with a chapter which is connected to chapter 1 in geography, development. But then the chapter starts a little bit different. There's a sectors of Indian economy aega,
और क्या है, money and credit है, globalization in Indian economy है. I don't know how many feel a chant or a little bit of soft corner for economics, but then quite interesting है. Some colleges offer biology, choice economics. I've taught students who have done 2 years of engineering, 2 years of economics. A girl from our own UT only. She told me, sir, it is integrated engineering. Integrated 12th, I understand. I hope you also understand. But integrated engineering, I have never. But there are courses, computer science plus economics. That also now offered. So don't feel this economics is one dead subject. And unfortunately, I have done my specialization from that. So I feel thoda sa, hai na? But geography has a good chapters, like the first chapters which I'll be jumping to is resources and development. My method of teaching, I'll write it on the board, make you to understand and make you to learn also, and you have to write along with me. Notes, I hope, I don't know schools, how schools have already in process, is it? Yes. Any first chapter, any school finished? Development finished? Sir, geography first chapter. Finished. Then did they start with second chapter? No, then we jump to civics. Civics. No economics, is it? Economics they start later. Okay. So I will go with R&D only, resources and development. I think majority schools have not started. Sure, I think I will start that only. But definitely you will feel the difference what they have taught and what SND24 I've got a Neki habit. But definitely school I know how do they do it. Then chapter number 2 onwards we have forest and wildlife. Then we have water resources. We have drainage. Then agriculture. So these topics will demand something extra from you as compared to your 9th. 9th geography was not so difficult like 10th, but 10th will ask some more. So you make SST, especially geography. You know, that doesn't mean that you give less importance to your history, but same importance. Shall we? So shall we start with our chapter number 1? So pick up your notebook, put today's date and write the topic name. Resources and development. Related to discipline, that I'll be very strict. 9th standard I allowed no personal talks in between. I will not be asking what is the talk going on. Either girl or a boy, please move out of my room. With the due respect, I'll say to the kid, I'll send them out. So whatever you have any query, as long as I'm inside, you have to talk only to me. Chalega? Boys especially and girls also. I'm seeing that it is in your hand. Why? What is that? Ask me. So this is what I will be starting today. Is 13th, is it? 13th. So we will be talking like this. Last year only I introduced. So if I say A, I'll be starting like 1, 2. I have not put the topic like this, or I can put like this, easy. 1, 2, again 1, 2. So we'll pick up 1A and start that subtopic like that. Okay. So only put the heading, draw that margin, and keep it ready. Hey, is your notebook? Nice. Yeah. मुझे लगा I could see one piece of paper in it. Sure, is it? So before I start jumping into that thorough geography, I'll just introduce, since volume has come, it's easy for me to run through the chapter at least. So the first page content itself you can understand what is in store for you, at least from this chapter. Everyone, keep a pencil ready. Go to that content page only. So the first topic that you can write is A is resources. Now don't write. Then we can write 1, B, they themselves is given. Development of resources, under that we have 3. What are they? Resource planning, and conservation of resources. Very good. I need some students like this. Then look at that. Up till H, there is no subtopic. So normally I club these. Land resources, utilization, and even this. So C, D, E, there only you circle it.
and write only C. Circle that and write only C because इतना बड़ा नहीं आता है. And don't rename anything. Let it be as it is. Then this also there is only short note. So you can write SN over there. Land degradation SN. Short note. And for conservation you write meaning. इधर conservation है ना meaning. छोटा सा लिखो. They'll ask what is conservation of resources. That's it. Every bench is having a volume. Everyone, in fact, anybody without the volume, tell me. Why, man? You didn't approach them. They didn't give you. How many do not have a volume? Just raise your hand. बच्चा जान अभी ले ले. हाँ लेकर don't mind. वो attendance sheet भी दे दे. Where is it? Everyone have signed the newcomer. Wait. No, you go and get it. You get your book. Anybody didn't get it? Tell me. Everyone. Okay. Then soil as a resource. Again, you write formation करके एक topic आएगा. Soil formation. So bracket में इधर लिखना. Formation of soil. Then classification, you can put star mark to alluvial and black soil. Because this is a very vast topic, I won't be doing fully. Fully matlab explain, but for your study. Black soil only put 2 star mark, one each. And then go down directly, it is mountain soil, again put 1 star mark. And ये पूरा topic को है ना, curly bracket डालना. You know how to put a curly bracket, importance, and डालना short question only, SN. ये erosion and soil conservation. They'll ask you what is soil erosion, causes, what is soil, bas. What are we supposed to write? Short note or short questions. Now run through the topic and tell me. There are many topics which are repetitive. I think ऐसा कोई topic नहीं है जिसमें आपको लगता है कि सर ये something new है. Let us understand from your analysis. It becomes easy for me to teach. Let's you guys demand and I'll go. I'll go step by step, no problem at all. Hey, why were you late today? What's your name, stand up? Why are you late today? And where is that certain apparatus? Give it to me. Not this one, the one that you're wearing. Give it to me. Come. Hey, anyone? Sabko mila na volume? ठीक है. First two. Keep it there. Where are you coming from? This area or? So this is Sanpada only. I'm talking to her. She's giving the address. I came from Hyderabad. Who? Where? I went to my cousin's place. Take a seat. Coming late is not an issue. Sit down. Okay. Now tell me first. I'll ask. Everybody knows the meaning of the word resource. Resource. Confirm. Confirm. Technically लिख सकता है 1 mark के लिए what is a resource or define resource. चलो define नहीं करते, simple way में बोलते हैं. Is soil a resource? Yes, sir. Water? Yes. Land? Yes. Human being? Yes. Human resource. Sorry, I'm not laughing at you. Is human a resource? Yes, sir. So you guys? Yes. Resource. We are resources in baking. The resource in baking, Oh, because making. Yeah. But अभी भी तो family club resource ही है ना? No parents tell you that you are my resource. Oh my dear, very bad यार. कैसे? They give us all kinds of unwanted adjectives ना, जो हम लोग पूछते भी नहीं है. तू ये है, तू वो है. But कभी तो बोलो कि तू मेरा क्या है? What is that हिंदी? चांद है. हाँ, resource है या etc. बोलते हैं क्या जरा मैं भी तो सुनूं क्या बोलता हूँ. पापा अपना ही है ना? यार बोलते तो हर रोज बोलते हैं या साल में एक बार? अच्छा ठीक है सर. क्योंकि मेरा पापा पहला अगर कुछ मस्ती का न्यूज आया ना, फर्स्ट थिंग ही विल कॉल मी वेरी स्वीटली. मैं जैसे उनके नजदीक जाएगा 1 ही विल गिव मी एंड सेकंड ही लास्ट में क्या हुआ, मतलब मार दिया ना, फिर बात खत्म. नेबर का कंप्लेंट मैं स्कूल से आने से पहले पापा को मिल जाता है एंड फर्स्ट थिंग ही विल स्लैप मी वेरी टाइट एंड देन बोलेगा अभी क्या मस्ती किया बताओ, पनिशमेंट दे दिया ना, बात खत्म. आई विल नॉट. और एक से तो मार नहीं बोलूंगा.
अच्छा, right. Before touching you or before beating you, they should ask ना क्या हुआ. Then you judge it. Now I think India is the only country where you and me are little bit battered by the parents. अभी भी है, इंडिया में भी है. It is a punishable offense. कुछ है parents है. It is a punishable offense. तो बच्चा को 5 साल की उम्र से उसको पता चलता है, मामा you should not touch me, give me space. And then if mother is coming into her world, she can lodge a police complaint. And police will come duly, मम्मी और बेटी को बाजू में बैठा के इंक्वायरी करेगा. अभी सोचा आप दोनों के बीच में एक पुलिस बैठ के पूछ रहा है, यस माय डियर चाइल्ड, एंड आपने बोला कल इसने ये लेके नहीं दिया, कल वो लेके नहीं दिया, चल कंप्लेंट एक्स्ट्रा लगाते हैं. What will be the plight of your parent? And if your parent wants to say, police will keep quiet, the child is speaking. मतलब child को इतना importance देता है. So I always believe you are a resource, no doubt at all. But is the resource ready-made है? I have to supply to you so many things. Food, clothing, shelter तो सबको मिलता है. Education ना चाहते हो भी लेके जाता है हमको, है ना? And health care. Yesterday I was discussing, I don't know which batch it was. I was asking, are you living a quality life? Really? Quality life is not, my dear, McDonald's or something other that you enjoy. Sir, mall में गया, that is benefits, facility. But is it quality life? How do you define the quality of life? That you are getting, na? देखो, I feel quality of human life is when you get clean air to breathe. AC है sir, filter. No, very objective. Why subjective? You personally. No. Every bacha, a 3-month-old bacha born and he or she is suffering from asthma. Wait. I'll come. Is that, can I blame that 3-month-old baby? No. But whom to be blamed? City, pollution. Abhi bolo quality of life. However good water filter you have, sorry to say, the water filter reduces your immunity strength. Anyway, it comes through chemical process only. You go to interior parts of Maharashtra, they drink the normal water which they draw it from the wells. Well. That water is 100 times better than the one boil jo bhi karna hai. Because Corona has taught us only one thing. What is that? You and me. You and me have to be immune. So immunity biscuits, immunity chocolate, immunity चिक्की सब आ गया. तो क्या मैं एक महीना में immunity खाया तो क्या immunity बढ़ेगा? It is built over a period of time. Why does a boy or a girl born and brought up in such a rural area is far more better than you and me by resisting the disease? Clean air है, drinking water अच्छा है, McDonald's नहीं है या कौन सा seafoods mall नहीं है, that is different. But their quality of life is good. Because you visit any foreign country except India and some other Asian countries, the amount of dust settling on your car is almost 1% to that of the dust that settles in our cars. Can we blame India then? No, फिर ये dust आता कहाँ से? India is a developing ऐसा नहीं है. No, not developing है, थोड़ा geographical reason भी है. But you and me are very careless. Have you seen now the buildings are covered with that green color cloth? Yes. पहले किधर था? नहीं था. Even our own the garbage collecting man. Do you anytime pass by with closing the nose without? How garbage? अरे वो जो आता है NMC का. How foul smell it is. What does it mean? Still we have to have a long path. So I say definitely you are a resource, but you are a resource in form. Resource in the process. When you be a complete resource. When you complete our education and do something. And started earning, that's correct. Earning का मतलब ये नहीं कि मैं अपने ही पॉकेट भर रहा हूँ, but I'm paying the tax also. Now I attended a long election commissioning session. मैं नहीं था, मेरे teachers लोग काम कर रहे थे. सर आप, मैं बोला जाओ दूसरा काम नहीं. There is a 2-day training session going on. And every teacher has to. मैंने बोला मैं नहीं करता. तो ऑफिसर बोला क्यों? मैं बोला हमारे पास बहुत चलता है, ये नहीं करना. As an independent, as a responsible citizen, you must vote. हमारे मेजॉरिटी टीचर सर छुट्टी में क्या करना है? सर हम लोग पिकनिक जाएंगे. बोला ये ट्रेनिंग करके अटेंड करके आया, तुरंत पिकनिक का बात चल रही. ट्रेनिंग में उनको पूरा वो जो सिस्टम है, व्हाट इज दैट, ईवीएम ना, वहां से लेके पोलिंग बूथ में कैसा सारा कुछ उनको एक्सप्लेन करते हैं. लंच, कॉफी, ब्रेकफास्ट, इवन 4 बजे तक अभी ट्रेनिंग चालू है.
Evening breakfast also, and they pay you also. What is all this? It's a democratic process to you understand how responsible you going and voting. But 90% of the people, what do? Sir, election है sir. फिर लोनावाला जा रहे हैं. Sir, election है. मैं family के साथ picnic चले गए. Is it right or wrong? Absolutely wrong. There are certain developed countries who penalize the citizen if they do not vote. But India, no, it is democracy. Why not? अब इंडिया में कितना लोगों को वोटर्स को पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? इज इट डेमोक्रेसी? मतलब फिर हम तो लेते ही हैं. इधर नहीं, सिटीज में नहीं मिलता है. आई वर्कड इन सर्टेन फॉरेन कंट्रीज वेयर सर्टेन अरियर्स कम टू देयर अकाउंट. रूलिंग पार्टी अरियर्स डालता है. अभी मेरा ब्रदर है, उसने बोला $600 मेरा अकाउंट में आया विदाउट आई एम वर्किंग फॉर दैट. मैंने बोला व्हाट इज दिस $600? वो इंडिया में जो ब्राइब मिलता है ना वोटिंग के टाइम, ये भी ब्राइब ही है, बट गवर्नमेंट एकदम सोफिस्टिकेटेड ब्राइब देता है. हाँ, दे वो कंपनी का अकाउंट्स में बोलता है ये अरियर्स है, आपको ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, बट वो बोलता है $600 इज ओनली दैट आई शुड गो एंड वोट फॉर द रूलिंग पार्टी. बस कितना अच्छा होगा. मोदी जी सबके अकाउंट में 15 लाख बोले, अभी तक 5 कुछ आया नहीं. सडनली मेरा अकाउंट में 2 लाख आया एंड बीजेपी ने बोला कि सर ये आप पिछले 15 साल से टीचिंग कर रहे हैं तो आपको हम चंदा दें. इनडायरेक्टली आई विल बी वेरी हैप्पी. बीजेपी ने दिया, चलो बीजेपी को वोट करें. कांग्रेस ने नहीं दिया, मैं नहीं वोट करेगा. आई एम पुटिंग अ बायस्ड नेचर. So when I come back to the word resource, as a resource is natural gifts, correct? Are they gifts really? Because initially we are not paying for it. Is it available to you and me? It's available to everyone, every citizen. I like Africa just because you get Rolex watches, the best of the best Rolex. I am not wearing, it's a very cheap kind of a watch. But you get a diamonds also. But still Africa is an underdeveloped country. क्या नहीं है अफ्रीका में? हाँ? यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. क्यों नहीं कर रहे हैं? There is a reason. Lack of technology. As she was trying to say, the white has brought the technology. अभी आप 10th history में करेगा. Even the diseases were spread. रिंडरपेस्ट करके एक बैक्टीरिया को लेकर आके छोड़ दिया अफ्रीका में. That is also kind of colonialism. अब you know corona, many people said it is Chinese corona. Not many. Donald Trump ही बोला था, the ex-president of America. I call him as American Rahul Gandhi. हाँ, because उसका भी मुंह इसी के तरह चलता है. Unwantedly he will say blabber anything. In fact he initially told कि हम कुछ chemicals देंगे, आप पी लो, कोरोना नहीं होगा. जैसे हमारा कौन है? That Baba, what's his name? हाँ, बाबा माफी मांग रहा है, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कुछ नहीं, दाढ़ी उड़ी काट के वरना हम काटेंगे आपका. हाँ, big penalty on him because he sold that coronel ना, and he gave false promises to the people. ये अपना एरिया का पतंजलि, उसका जो डॉक्टर है मेरा काफी अच्छा दोस्त है, वो मुझे फोन करके बोला सर कोरोनिल है ना, मैंने आपको 3 डब्बा लेकर रखा है, आप ले लो सर, चुपके से नहीं मिलेगा. बोले क्यों खाने का कोरोनिल? बोले क्या कोरोनिल क्यों खाने का सर, वायरस से बचो. मतलब आपने खाया? बिल्कुल सर. आपको हुआ? अभी मालूम पड़ेगा. I did not purchase. I don't want to eat those. हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. But he made false promises to the entire people. अभी Supreme Court is against he and that Mr. Balakrishna. No, just that is other. There are other foods also which are not so good. But coronel was biggest failure I feel. So India is a country. I said India is a country of surplus. Which surplus you will feel? Human surplus. और कुछ है इंडिया में surplus? सर नॉलेज है, आइडियाज है. आप बस एक गली पूछ लो, आपको पूरा एरिया का घुमा के दिखाएगा. ऐसे जाओ, फिर लेफ्ट लो, फिर राइट लो. I have been into so many, sorry, I don't know to say, countries which are out of India working. You ask any single citizen, sir, I want to go to the, I forgot that, Richard Bulawai. They call it as Bulawai. Oh, HDB नहीं बोलते. So first thing, are you new? I said yes. Do you have GPS? I said yes. Google it. अभी let us reverse the scene. If I come to India and if I ask, सर ये भूमिराज क्या है, कोस्टा जो भी है, कहाँ है? हाँ सर, आपको पाम बीच मालूम है? मालूम है. भूमिराज मालूम है? मालूम है. लेफ्ट जाओ सर, फिर राइट मारो सर, फिर लेफ्ट मारो, फिर राइट मारो. क्या होगा? नहीं मिला तो दोबारा मेरे पास आओ. I will do it. Are we really guiding him or misguiding him? Guiding him.
But look at the guides in India. What does it mean? Today we have a government which is really forcing the situation of 2047. You know that? Today he is 74 years old. Today matlab almost 75 pakad lo. Next 40 years or next 30 years he might be close to 90. Our Prime Minister. राहुल गांधी बेचारा बस वो चेयर में एक दिन बैठने के लिए लड़ रहा है. इन लोग तो फेविकोल का 4-5 डब्बा खाली कर लिया. मैं नहीं उठूंगा यहाँ से. नहीं, I am not predicting. This is what they are doing. अभी जैसे आप 10th के बाद क्या करने का सोचता है ना? But there are certain students सर मैं MBBS के बाद MD करने वाला है और MBBS में मैं ये करेगा और MD में ये करेगा. Our own UT students हैं. And I met that girl. She is in some Nair hospital. She is MD in orthopedics. I think related to bone. तो शायद वो भी मोदी के जैसे अगले 5 साल का प्लानिंग उसने पहले ही करना. What does it mean? Stop the 5-year plan. No. Yeah. He is bringing a different capitalistic model. We believe that there is one resource which are scarce in India, which needs to be utilized properly. Then, since it is scarce, we need one more additional step. RP करके उधर रखा है, resource planning. Do you plan your career? या पेरेंट्स ही करता रहता, आप बोलता हाँ जो मुझे क्या जो करने का करो. एक लड़का आके अपना यूटी, सर मेरा पापा ना दिन रात बोलता तू इंजीनियर बन जा. तो उन्होंने बन जाना. वो नहीं बनाना सर, इट्स फोर्सिंग ऑन मी. मे बी द गर्ल सेड आई डू नॉट नो व्हाट योर मदर आस्क्ड. आई ऑलवेज बिलीव नाइदर डैड और नॉर मॉम आस्क योर चाइल्ड. वो तो बोलता है आप कुछ भी कर लो, मैं तो अनएम्प्लॉयड सेक्शन में ही बैठा रहेगा. द रेट एट व्हिच द जॉब्स आर वैनिशिंग इन इंडिया, द नेक्स्ट 5 years सोच के देखो. फिर तुरंत हमारा मोदी का ऐड आता है बीच में, है ना? मोदी है तो मुमकिन है. मतलब कौन सा मुमकिन है? इतना अनएम्प्लॉयड बड़ा है. मोदी आपके पार क्या है? 400 पार. तो तुरंत बच्चा बोलता है मेरा तो 500 है, 400 पार मार्क्स दे देगा तो आई एम रेडी टू वोट. देखो व्हाट ऑल द स्लोगन्स दे पुट इट ना, इज इट एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी कॉमन मैन? मे बी, मे नॉट बी. नाउ आई हैव रेड विद वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज इन नीदरलैंड. वो बोलता है कि Tier 1, Tier 2 city of India is good. मतलब जैसा नवी मुंबई is a Tier 2 city. 90% of Maharashtra do not have electricity and water supply properly. Then can we say India is a really developing country? However you and me provide the services are less and people are More. Last year only India has surpassed China. Definitely population में ही रहेगा, है ना? China took almost 40 years to achieve the place what it is today. India will take next 80 years to achieve the place what China has achieved. But then तब तक China कितना आगे चले जाए? China can create artificial rain successfully करता है वो. They have created even artificial sunlight also. I don't know what is the heat, and they have created artificial egg, artificial rice, artificial meat. पता नहीं क्या नहीं करेगा. Artificial meat is exported to America. After 5 years they came to know आधा मीट ओरिजिनल है, आधा मीट पर डुप्लीकेट है. अरे तुम लोग ने खाया भी उस मीट को? हाँ, मालूम तो बाद में पड़ा. अभी इंडिया में आता था राइस which are made out of plastics. हाँ, कुछ राइस के बीच में वो प्लास्टिक राइस, एग फालतू. No. It's more expensive than producing. He's doing it. He's doing it. So I say, when I say resource planning in India, resource planning means using the resources judiciously. What is the meaning of that judiciously? Carefully. हाँ, sustainable बात में लिख रहा हूँ. What is mean by carefully? I am saying I am using this books judicially. आज बंद किया, 3 महीने तक open नहीं किया. Is it judiciously? No. Never. Use it, but use it in such a way that it satisfies your demands. And without sacrificing the demands of whom? The future. Then I will discuss a word which is called as sustainable development. Have anybody have heard the word sustainable? Yes, sir. What is that word? Making sure that something You does sit not. like this. I cannot see you from any other place. That's the issue. But then come this side. But आप इधर आ जाओ. Hey, I'm standing in the corner of the room. चलो middle में जाओ. Is it okay? Yes. So we always believe sustainability is very simple. आपको अगर मम्मी ने बोला बेटा ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, आप करेंगे? इट डिपेंड्स किस पे कॉम्प्रोमाइज करना. मोबाइल पे तो बिल्कुल नहीं.
ये देखो ये शादी हो गया अभी टाइम है यार रुक जा चालू है प्रोसेस नहीं अभी से बुकिंग करेगा तो फिर नहीं करेगा तो फिर वो बात क्यों लिया अरे इट्स ओके इंडिपेंडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया you are but don't discuss that matter we always believe every girl and a boy has a dream which they feel ki parents will make the dream come true is it so your dream professional dream only और भी कुछ ड्रीम रखा है रहेगा रहेगा अभी आपने आपको सिंड्रेला समझती है लड़की और आपने आपको प्रिंस या प्रिंसेस और लड़का रहना दोनों सर बट मेरा सैंडल दोनों मेरे पास है बट चलेगा जनरली आई एम सेइंग So I said, if you have a dream, I said cherish your dream. लड़का बोलता दिन रात वही तो देखता रहता है, but fulfill नहीं होता. Is a dream to be fulfilled on your own? Working छोड़ो. What is that? You have to slot yourself, and you have to dedicate yourself. पिछले 9 साल से क्या कुछ नहीं हुआ, अब 1 साल में क्या हो जाए? No, this is just a foundation of your life. I remember my first 10th standard board exam. That also first exam like you. I was in ICSE. We have English and I was walking to my schools very leisurely रोड में चलते चलते भी पढ़ के ही जाता था एक अंकल वहां से स्कूटर से बेटा 10th स्टैंडर्ड है मैंने बोला हाँ अंकल अभी बोर्ड एग्जाम कोई नहीं था मेरे एरिया में आई लिव इन अ सेंट्रल बोर्ड कॉलोनी तो बोलते हैं आई थॉट आई एम द फर्स्ट वन टू गो टू द स्कूल बोलते हैं जल्दी जाओ पूरा स्कूल इकट्ठा हो गया तुम अभी जा रहा है हॉल टिकट में 10:30 लिखा था एग्जाम एंड आई मेरीली वॉकड बाय 10:15 एक 10 मिनट का दूर था उन्होंने बोला हॉल के अंदर आपको 10 o'clock को पहुंचना है मैं किधर हॉल टिकट इतना प्रॉपर्ली रीड किया आई वेंट रनिंग इनसाइड द बोर्ड एग्जाम सेंटर एक्सेप्ट मी एंड माय वन फ्रेंड ऑल वर इन वन रूम तो उन्होंने बोला रूम नंबर ढूंढो इधर भागा उधर भागा फिर मेरा प्रिंसिपल कम हियर यू सीम टू बी स्कॉलर वो बार बार मुझे छेड़ता रहता था मैं बोला हाँ सर टुडे आल्सो यू आर लेट मतलब तू जरा जल्दी बात करना मुझे रूम ढूंढने का आई अंडरस्टैंड वो ऐसे ही बात करता था Now what are you going to do? बोले तू हटेगा तो जाएगा rush for the class बोले ये पहले बोलना then I went in searchingly question paper भी दे दिया answer sheet भी दे दिया अरे you are late जैसे sorry to ask this time no हाँ मैडम थोड़ा नहीं 10 मिनट हो गए and I could see me and मेरा एक friend था Alvin अभी भी मुझे याद है I was in the last bench और यार गेस्ट लेट है कुछ सेटिंग करके रखा हूँ बोले क्या पहले पेपर तो लेने थे मुझे देन पूरा एग्जाम में वो स्क्रैच करते रहेगा ये बता वो बता मैं लगे मैं लेट आया लव मी सो लेट मी पुल यू बैक बिकॉज दिस इज द ड्रीम दैट यू एंड मी माइट हैव सीन सर एग्जाम में ना सीटिंग अरेंजमेंट परफेक्ट होना चाहिए देखो एंड जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है या जो अच्छा मुझे हेल्प करता है ना वो मेरा आगे ही बैठना चाहिए हाँ बाजू में भी बैठना चाहिए एंड जो मॉडरेटर आया ना he should be the perfect one I've ever seen I don't know who is it. But I personally have last year gone to so many schools and colleges. They thoroughly check each and every pocket of the student. Remove the shoes, socks भी निकाल के देखा. मैंने बोला अरे गंदा बदबू आ रहा है. चलेगा सर आप साइड में हटो. लड़कियों का तो अलग हो गर्ल्स के लिए लेडी टीचर्स रहते हैं. एंड हमारे बच्चा कुछ इधर उधर पकड़ा के ना फिर वहाँ से वो कोऑर्डिनेटर बोलता सर यू आर कॉलेज स्टूडेंट. बोला हाँ सर ठीक है ना सर. अभी मैं उसके सामने कैसे इसको गाली दूँ ना तेरे दिन से मेरा चचरा हो रहा है. फिर लड़का सर वो एक ही चिट लाया सर मतलब एक ही चिट लाया वो पकड़ा गया तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ क्या एंड वहाँ से हमारा प्रिंसिपल ऑल द चिल्ड्रन इन बोला ऑल आर इन यू आर व्हाट आर यू डूइंग देन यू कम टू द कॉलेज फिर वहाँ से कॉलेज भागना एवरी डे आई वाज देयर इन द बोर्ड एग्जाम सेंटर एस्कॉर्टिंग के लिए जाने बोलते व्हाट डज इट मीन आफ्टर माई लाइफ आई हैव फर्स्ट टाइम सीन हाउ द चिल्ड्रन आर ट्रेम्बलिंग फियरफुल स्पेशली गर्ल्स सर आप आए सर अच्छा हो गया सर बोला मैं अंदर नहीं आएगा आप जाओ I was there up till the board exam center. I went to the principal, spoke to my students. I briefed them also, but to certain distance only they allowed. And फिर हमारे parents, अलग है, मतलब मैं आया तो मेरा भी बहुत सारा काम है. So when I feel this is your dream, 10th standard is a real stepping stone. You believe that? मैं लगता है सर 10th standard होने दो सर. I will enjoy a party. कोई पार्टी उठी का जरूरत नहीं. I think अभी 10th का आगे का मम्मी ने क्लास बुकिंग करके रखा रहेगा. 10th होते ही मेरा बेटा तुरंत जाएगा क्लास में हाँ यू डोंट वांट टू गो हाँ ले लो एक 15-20 दिन या 1 महीने का ब्रेक तो आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस इट्स ओके यू कैन डू इट बट आउटसाइड द क्लास
what I was explaining, resource planning. Abhi resource planning, when I said plan the use of resource in such a way that whatever resources is available for you, it is also available for whom? Future. But are you sacrificing your demand? जैसे आज एक लवली मूवी का टिकट है एंड अवेलेबल भी है और रेट्स भी कम है, उस दिन लेक्चर आ गया, इसको आज ही आने का था यार मूवी ऑल द यू आर सिटिंग हियर और वहां से फ्रेंड व्हाट्सएप कर रहा है, फैंटास्टिक मूवी है, ये है वो है, बच्चा अरे यार ये खड़ूसा के खड़ा है. You have compromised to go to the movie, but at the same time you are listening to me. जैसे वो लड़का आके बाहर बोला सर क्या मूवी था, हाँ यार हमारा अटेंडेंस भी कंपलसरी है, और यूटी है ना तुरंत ईमेल भेज देता है, वो भी मेरा बापू का मोबाइल पे ही था. मेरा बापू जी इतना आदरणीय है, तुरंत फोन करते हैं बता तू किधर है, और क्या बस रात भर डिनर भर वही चालू था हमारा. एंड आपका फ्रेंड बोलता मूवी वाज गुड. आई थिंक देयर इज अ हिंदी मूवी कॉल्ड क्रू हैज कम इन. वन ऑफ माय फ्रेंड हु वर्क्स इन गुड मूवीज है. अच्छा तूने नहीं देखा? मैं देखा नहीं था फिर. तो फिर क्यों बोला बेकार? तुमने देखा ना? हाँ. अच्छा देखने के बाद मालूम पड़ा. तो वन ऑफ माय फ्रेंड ही वर्क्स इन अलीबाग, ही इज अ प्रिंसिपल. तो ही टोल्ड मी सर आप जाके देखो बहुत फैंटास्टिक मूवी है. मतलब आप जाके देखो, टाइम मिला ना. तो व्हेन आई यूज द वर्ड प्लानिंग, you are planning not only for today, you are planning for next year, you are planning for next 10 years, you might plan for next 100 years. But present का पहला fulfill करो. If I'm having book in my hand, then I'm daydreaming. Is the book is having any use? बंद करके daydream करो ना, क्या फर्क है? अभी लगता है कि I'm boring too much, sir. आप आज ज़्यादा बोर कर रहा है. बेस्ट है कि आप निकलो या तो मैं निकल जाता. फिर बोलेगा नहीं नहीं आप बैठो मैं जाकर आता. What does it mean? Fundamental right है इसमें क्या? When I take you resource planning, we have resource planning in India. 3 stages I have to explain. Identification, है ना? Then we say resource planning, strategizing. Then finally matching your goal with that of the national goal. मैंने पूरा words नहीं बोला. There is long process. What is that importance of resource planning in a country like India? Is it a need? Yes. Why? So many growing population. Scarce is the resource. Population is almost ever increasing. And on the top, our demands are also every day rising. So what can I do? Stop using? Can I say increase the resource? Not possible. Can I say judiciously use the resource? Yes. Can I say develop some substitutes? Yes. Recycle the resource? Yes. Nowadays even recycling of thoughts have come in. Can you recycle your thoughts? What is thoughts generally? हाँ सोच क्या होता है? I don't know. हाँ she saying. She saying. I can. I tell you later. You can. Somebody किसने बोला? You can. That the brain is the only function of the human body which can take you from here to somewhere else, although you are right in front of me. And then you can come back also within no time. So the fastest mode of transport, it is the flight of imagination. So India has now got a vision of what? Becoming a developed country. Government says 2047, but with the resource planning, judicious use, can we not attain the resource planning much before? Maybe or may not be. किसने बोला? Depends on the prime minister who is ruling the country. अगर राहुल बाबा आया तो डेफिनेटली जल्दी हो जाएगा. हाँ क्योंकि वो एक ही दिन में आपको चांद पे लेके जाने का बात करते हैं है ना सर. कैसे जाएंगे वो आप टेंशन मत लो, मैं लेके जाऊंगा आपको. बट मोदी जी थोड़ा कड़क है, वो बोलता है हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा. अच्छा आई डोंट लाइक. राहुल इज लाइक मी ओनली. बिल्कुल बैठे बैठे बोलता है 95% लेकर आओगे, आप टेंशन मत लो, है ना. और I think Modi told कि every kisan will get 6,000 rupees per month multiplied by 12 months. ये भाई साहब ने 60,000 per annum डाल दिया. And farmers are saying, वाह यही तो मैं चाह रहा था. तो नीचे से किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूछा सर 60,000 आप लाएंगे कैसे, है ना. हर पर्सन को अगर 60,000 दे रहा है तो he said no problem, we'll put 2 more double taxes over the farmers. Farmers ने बोला इधर दूर लगा, हमसे ही टैक्स एक्स्ट्रा लेगा और वो पैसा हमको ही देगा. हाँ
They don't. Lot of these things. So we always believe this resource planning in India is very, very important. Then I always say development of my students is more important than the development of resource. Is it so? तो आप लोगों को क्या लगता है 9 से 10th में आके कुछ डेवलपमेंट करेक्ट ह्यूमन रिसोर्स हाउ विल यू डेवलप ऑन योर ओन सर क्वालिटी एजुकेशन डूइंग माय होमवर्क कंप्लीटली बोला टीचर है ना उसको और कोई एग्जांपल आता ही नहीं एंजॉयमेंट ऑफ योर लाइफ शुड बी मोर देन लास्ट ईयर काहे का एंजॉयमेंट इट्स हे वॉश योर फेस एंड जाओ पानी ले लो पानी जाओ इट्स ओके ना नो प्रॉब्लम इवन मुझे नहीं जाता तो मैं अपना मुंह छुपा के भाग जाता हूँ so we always believe one thing is important in your life except studies क्या चाहिए आपको some colors of your life what is that word colors channel है नहीं है हाँ आपका लाइफ में क्या कलर्स है सर कल एक लड़की ने इतना देर बात किया ना और मेरा पापा ने इतना झाड़ा मुझे मालूम पड़ा 3 दिन के बाद वो रक्षाबंधन के लिए घर पे आए and all thanks to my dad only and papa is so great and वो लड़का देख के बोला पापा I love you पापा आपने ये कहा क्या काम कर दिया पापा बोलते ठीक है बेटा अगले चांस मुंह बंद करो कुछ चांस नहीं then लड़कियों के साथ ये मम्मी का थोड़ा सा फेरी टेल चलता रहता कौन है बेटा कौन है मुझे ही मालूम नहीं कौन है बेटा क्या रुक तो सही फिर बहुत देर से रुको ना मम्मी why do you go on a walk right अरे बात तो करने दो बेटा आपका भाई लगता है हाँ बस यही रहेगा बाकी सब तू ही बना ले उसको what does it mean now if I talk to a girl who is equivalent to my age my mother only asks तो लड़की बहुत देर से बात कर रही है बोला हम लोग डिस्कस कर रहा था कल कॉलेज में बस और भी डिस्कस कर रहा था बस और भी कुछ बोला बस अरे इसके आगे बस कुछ पूछेगी भी वो अकेली है सिंगल है और ब्यूटीफुल है और मेरे से ज्यादा कमाती है कल चाय पर आएगी आर यू रेडी मैंने ये सब नहीं पूछा तो नहीं पूछने का करके मैंने ये इन्फॉर्मेशन दिया व्हाट डज इट मीन आई हैव नॉट प्लान बट मदर इज रेडी टू प्लान सो आई ऑलवेज बिलीव सस्टेनेबिलिटी इज देयर इन एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ व्हाट इज दैट वर्ड सस्टेनेबिलिटी देखो शी गॉट ब्यूटीफुल स्माइल क्या होगा सस्टेनेबिलिटी इज वेरी सिंपल सर ने कुछ पर्सनल स्टोरी टच करके बोला क्या इट्स ओके शी इज टच्ड बाय द स्टोरी and somebody is touched it. Your mother only. It's okay. You convince your mother. I'll get अपना story कैसे उधर सुना रहे सबके सामने. So we always believe that sustainability I feel is nothing. आप पहले अपना demands पूरा करो. हाँ रुको मैं आ गया. As a teacher I should not say this. Sir future किसने देखा sir? अरे क्यों? कल ही मूवी देखा ना कल होना. आज का पूरा कर लो. कल का देखेंगे. I think one of my Hindi teacher is very good with his Hindi. बोलते सर कबीर के दोहे में एक लिखा है और आप स्टूडेंट को सुना उनको मीनिंग मालूम है मतलब क्या है He told what is that काल करे सो आज कर आज करे सो अब है ना पल में प्रलय हुएगी वो उसका हिंदी काफी अच्छा है बहुरी करेगा कब सुना है सब लोगों ने What does it mean? कल का काम आज करो आज का काम अभी अगर पल में मतलब 1 सेकंड में अगर दुनिया बिगड़ गया लड़का बोलता फिर तो मुझे मूवी देखना पड़ेगा डोंट वरी फिर जो कबीर का लड़का ही टोल्ड एग्जैक्टली ऑपोजिट आज करे सो काल कर हाँ मतलब बोलो काल करे सो परसों इतना जल्दी क्या पड़ी है जीना है बहुत वर्षों सब लोग वाह सर वाह आप बस हमारे लिए your class teacher is giving an annual exam paper in your hand the first day you enter into your school बोले ये क्या मजाक है आज ही तो पहले दिन है कल दुनिया खत्म हो जाएगा आज दुनिया खत्म हो जाएगा बट तू खत्म नहीं होगी कैन वी एक्सपेक्ट फर्स्ट डे यू आर राइटिंग एनुअल एग्जाम मैडम पूरा साल भर के बाद भी मैं ये तैयार नहीं होता और तुम पहले दिन ठीक है एडवांस में पेपर दे दिया थैंक यू so there are certain things which comes with that time only जैसे भाई साहब ने कुछ शादी का बोला ठीक है she is a little bit shy it's okay matrimonials में है अरे it's okay what is it hey that is also one of the important issues we discussed with our students what is it अच्छा imbalance in the male to female ratio which does not so what ना polygamy in all communities कल मेरा एक ईद के लिए गया था वो लड़का मेरा फ्रेंड ही है ही इज ऑल्सो टीचर इन कोलाबा वो समझा रहा था कैसा है उनका 3 तलाक सिस्टम
कैसा हमारा रिलीजन में कैसा है उनका रिलीजन। हाँ तो रहने दो, वे हुई ये बोला कौन है बता, बुरा लगता है। क्यों बुरा लगेगा, मैं कुछ गलत थोड़ी बोला। कौन है कुछ जरूर इज आइडेंटिफाइंग सम पर्सन, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुझे क्यों छोड़ना, इट्स ओके कुछ नहीं, इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेटिव। जैसे when he stood for me, the first thing he asked me, no student, आपने कान में कुछ पहना है, ये ले निकाल के दे। That's okay, good. So we always believe this sustainability cannot be applied everywhere. Is it applied everywhere? But as far as geography is concerned, we can apply. Did I? Shall I give some notes? या और बोलते जाओ, explain करते जाओ। नहीं मैं देता हूँ। हाँ जी, अगले क्लास में। अच्छा, मेरा भाषण इतना अच्छा लगा। अरे मैं किधर इलेक्शन का ट्रेनिंग करके हूँ, आई एम नॉट अ कैंडिडेट। सो वी ऑलवेज बिलीव, देखो चिल्ड्रंस को एक बात बोलो कि स्टडीज इंपॉर्टेंट नहीं है, रुको आप तुरंत बोलता है सर आज शाम को है ना मेरे घर पे आओ, प्लीज कन्विंस मैं पापा से। इन मम्मी तो पापा से ही कन्विंस नहीं होते, आप छोड़ दो उसको, है ना। देखो स्टडीज इंपॉर्टेंट है, बट इसका मतलब स्टडी इज नॉट द होल लाइफ। हाँ, लाइफ फुल ऑफ स्टडीज हो सकती, बट स्टडीज इज नॉट फुल ऑफ है। इंस्टेड ऑफ नोटबुक्स आई गिव यू अ लैपटॉप, हाँ कब दे रहा तुरंत अनुभव सर बोलेंगे 1.5 लाख ले दो, नहीं चाहिए तू ही रख। वेलिंगर कॉलेज आई गो, नाउ आई डोंट गो, हाँ दे गिव एवरी स्टूडेंट 1 लैपटॉप। हाँ फ्री नहीं है, रुको मैं फीस बताऊंगा तो फिर मालूम पड़ेगा। हाँ, और वो लैपटॉप कंपनी के साथ टाई अप करके रखा है, मेरा 300 स्टूडेंट है, तेरा लैपटॉप जितना बिकेगा उसका 10% मुझे दे। और इधर उसने लैपटॉप देने की जगह पर 3 लाख से डायरेक्टली 7 लाख का फीस कर दिया। हाँ, उनका बिल्डिंग भी काफी अच्छा है, बिल्डिंग का पेंटिंग भी करने का पैसा चाहिए। तो व्हाट डज इट मीन? वी आर गिविंग यू एन एम्बिशन इन योर लाइफ। अभी व्हाट इज द एम्बिशन ऑफ यू? सर पढ़ाई छोड़ के कोई भी एम्बिशन चाहिए है क्या? ऐसा स्पोर्ट्समैन है, चैरिटी वर्कर है ना, और कुछ है? सर आई वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट सर। व्हाट इज एन एस्ट्रोनॉट? इसरो में जाके एग्जाम लिखो। अभी हमारी उधर के कॉलेज की लड़की, शी इज 12 पास आउट, शी वांट टू बिकम एन आईएएफ पायलट। उसकी मम्मी दिन रात मैसेज करती है, मतलब रुको, आई हैव टू टॉक टू वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज अ रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स पायलट, एंड ही बोलता है रुको सर मैं देता हूँ, बट एग्जाम्स आर वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट। तो कौन सा एग्जाम इजी है? So we talk about new word in geography, something called as conservation. What is conservation according to you? Save it, is it? No, not exactly save it. Save it. Using it in a manner that is. Save it for the future use. अगर future में मैं मर गया तो फिर किसके लिए मैं सेव करूँ? Future देखो LIC is one policy I always never taken. हाँ. Carefully, very good. How carefully? Put it in a test tube and watch it. Good. Everyone is right. Never I've opened any LIC policy on my name. क्यों? मेरे मरने के बाद पैसे मिले। अरे मेरे मरने के बाद तो मेरा माँ या बीवी को देगा, मुझे क्यों पैसे देना है ना? तू भाई दे। देखो you see majority Americans have spent their life in such a way, वो मरने के बाद कर्जा छोड़ के ही गए। How about Indians? एक बंगला है, 2 गाड़ी है, एक फार्म हाउस है, एंड देन फिर बेटा और बेटी के बीच में झगड़ा स्टार्ट, ये मैं लेगा वो हो गया। बट बेचारा जिंदगी भर वो कमा के सेव ही करता रहा, और उसका एंजॉयमेंट कौन करेगा? बट दिस कैन नॉट बी अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। तो आई से कंजर्वेशन, केयरफुल एंड जुडिशियस यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज so that the scarcity of the resources problem can be minimized. Like water is a free gift of nature. But do we keep on saying save water? Why? ये भी है ज्योग्राफी में, फर्स्ट चैप्टर में रहेगा आपको। Out of the 97% of the water which is there on the earth, only 0.87 is fresh water, not even 0.97. So is there a need to save water? Yes. So your history teacher, if you love the wars, they say future wars will be fought for waters. फ्यूचर का है का? अभी आप अफ्रीका में चले जाओ, देयर आर वाटर माफियास। हाँ, वाटर टैंकर को किडनैप करके लेके जा और रैंसम कॉल आता है, तेरा टैंकर मेरे पास है, पानी के साथ चाहिए तो इतना पैसे दे। नहीं, इट इज देयर। अफ्रीका दे डोंट गेट ड्रिंकिंग वाटर।
पार्लियामेंट ने क्रिटिसाइज कर दिया वाटर को लिटरली लोगों ने उसको मार डाला हाँ, आप अफ्रीका क्यों जा रहे हैं? Certain districts of Andhra and certain districts of Tamil Nadu, they do not have water. They have lot of trouble. Normally, in a country like India, you go to Rajasthan. One part is having good water, good supply. Other part is exactly opposite, full dry desert. Which is that part? Kutch area, हाँ गुजरात का है, गुजरात का है, हाँ जैसलमेर full of desert. And उधर जाके हम लोग अपना shower on करके पूरा गाना खत्म होने तक नहा रहा है. मालूम पड़ा पूरा बिल्डिंग का पब्लिक ने वॉशरूम से निकल के ऐसा धोया सभी को सर और एक गाना बाकी है नहीं तो ये पूरा मोहल्ला का पानी खत्म. Correct? Futuristic. How do they take a katora full of water, put a small cloth in it, wipe it, salute. हाँ ये सब साइंटिस्ट लोग बताते हैं. There are certain foreign countries who have started using the excess urine to convert that also into water. हाँ करते हैं. क्या she? नहीं clean water. That's what astronauts use. अभी क्या करेगा ना? There is no water. अरे मोरारजी देसाई, one of the great prime minister of India, every morning, वो तो मालूम है ना? He lived up till the age of 99 years. Every morning he used to drink one glass of his own. We are running away from the topic. I'm talking about water resources. So water resources in India is going to be scarce with the rise of population. Water resources in India is going to be a big trouble with the problem with the climatic change. When I'm going to teach you rainfall in India is not at all certain. Is it certain? Is it uncertain? Yes. Uncertain in time and uncertain in quantity. Both. You never know when the rainfall says goodbye to India and we are all waiting. Last year, when Delhi was going through serious pollution, India requested China to give a formula. How do they create artificial clouds and rainfall? China has a successful formula. It's a light combat aeroplane. I forgot the name of the chemical through which they spray it. Within 15 days, it becomes cloud. And 16 and the 17th day, heavy rainfall. एक तो pollution भी खत्म और पानी सोचो. They said we will not give the formula to India. हाँ. China के पास है formula. It's okay. China कुछ भी करता है. हाँ. नहीं artificial rain अभी नहीं है. पिछले 10 साल से China use कर रहा है. And China is the only country. कुछ नहीं चल रहा है. चाइनीज लोग को क्या फर्क है? Right. Because Delhi was going through serious pollution problem, so India wanted to ready. शायद अपने नवी मुंबई में भी चल रहा था. You might have seen एक कैनल जैसा रहेगा which keeps on spraying that water. हाँ वो मुंबई नवी मुंबई में चल रहा था. Just to reduce the level of pollution. अपने पास पानी हम छिड़काव कर रहे हैं. जब पानी नहीं है तो क्या छिड़काव करेगा ना? So it's a lot of global warming issues. It's like even we discuss the whole day. घर जाने के बाद हम भी उसी का पार्ट बन गए. It's like we teachers are discussing child labor और आधे घंटे के बाद एक 8-9 साल का बच्चा चाय लेकर आता है. And we teacher ना ऐसा हमारा ये भी कोई टाइम है, ये भी कोई टाइम है. जाओ निकलो यार. फिर जाने के बाद child labor is the most illegal offence. Anybody practices it, I am the first person to punish him. एक टीचर ने बोला सर थोड़ी देर पहले वही कर रहा था. So there are many conferences, many seminars, but end result is zero. So we always believe the amount of money every country is spending on the defense. Why is that? Oi, अच्छा which point I was talking then? मेरा ध्यान बट आपके ऊपर था. It's okay. चलो let us start writing. First write A. You write meaning. चाय का नहीं. Write down this. चाय का बात तो पहले ही बोल दिया. Resource. Write down. All natural gifts. Almost time है. Almost sorry. Resources are what did I say? Natural gifts. हाँ बना लेना. हाँ एक पेंसिल से बना. You don't have pencil? Resources are natural gifts available
to the citizens of same country are natural gifts. I mean, resources are natural gifts. the column में लिखना है. नहीं, बिल्डिंग का कॉलम तो पकड़ के बैठे. Natural कॉलम में लिखना है. सर क्या लिखना है? Resources are natural gifts. रुक जा पहले. Are you guys in a mood to write? We have good 5 minutes. I need to finish 2-3 terms. Resources are natural gifts available that are available to the citizens of same country. Available. No, I close my label. Available to the citizens of same country and application of given technology. And with the application of given technology makes human life more comfortable than ever before. Than not then. Technology. Makes human life more comfortable. You see, I have not even opened my volume. How will I repeat? All comes from my head and mouth. So after application. Of current technology makes human life more comfortable than ever before. Than, not then. Comfortable than. Wait. One whoever is completed now. Wait. You are trained the actually. Trained also your sister. No, that's Abhishek. We are not related to any Priyanka. Read. She is reading. Whatever. Read. Resources are natural gifts available to the citizens of same country, and application of given technology makes human life more comfortable than ever before. बस और क्या नेक्स्ट सेंटेंस लिखना डेवलपमेंट ये थोड़ा सा refers to exploitation of available resources. Exploitation का positive है. exploitation of Available resources. तो बस नासा का टी-शर्ट पहन और स्लो इतना स्लो है ना. Teacher मैं development. You are the same old boy I have seen in my 9th standard. Nothing changes. Exploitation of available scarce resources. ठीक है resources. अब जितना बार पूछेगा I'll add 1 or 2 adjectives. Along with resources. And then you bring. ये क्लास है जो मन में वही आएगा. कौन आया बन आया भी what did I say? Available resources along with preservation and reuse. Along with preservation and reuse. Underline both the word preservation and reuse. Then, अरे भाई marker label you say that but current line one more sentence अब इतना भाला बोला है देखा ठीक है करने देना ये तो सर जो वर्क यू है वो भी कर मतलब टीचर को भी छोड़ना नहीं है अरे जाने दे ओल्ड आंटी से इतना ही बड़ा बिल्डिंग ऐसे नहीं बने. चलो so next segment. So continue after this. my thoughts will disturb. इसके बारे में सोच रहा था. ठीक है. Thank you so much. I'll come back. चलेगा. ठीक है. I don't know. हाँ. रस्ते पे आते We need to answer somewhere.